Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends and welcome to Visionary Global Consultancy. So friends, in this video we will discuss about Asian Development Bank Internship Program. एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये पूरी दुनिया में काम करती है, तो इसकी इंटर्नशिप के बारे में हम बात करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एडीबी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो डिटेल्स में जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू एज ऑलवेज डू लाइक दिस वीडियो, share and subscribe my YouTube channel. The internship program offers the opportunity to work in a major international development organization, work collaboratively with the experienced professionals from over 50 different countries, gain a deeper understanding of development finance and the impact of work ADB does and contribute to ADB's business through research outputs. ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कौन से कैंडिडेट्स के लिए है जो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं? इंटर्नशिप कैंडिडेट्स मस्ट बी enrolled in a master's or PhD level program, be engaged in academic study in a field directly related to ADB's work, be a national of one of ADB's members. Most of the जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं. Possess an excellent command of English and have a professional experience relevant to the assignment. Means to say, the students who are related to business management can easily apply for this internship program. You have to apply through ADB career and employment system for this internship program. Application period for the year 2023 internship program. First batch they have announced from 15th of July to 15th of September 2022. जो अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी अभी डेडलाइन मौजूद है 15th of September तक, तो आप इसी बैच के लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट बैच के लिए. इसकी सेकंड बैच की जो अनाउंसमेंट होगी वो होगी 15 ऑफ दिसंबर 2022 से 15 ऑफ फरवरी 2023 तक. एंड द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडीबी इंटर्नशिप्स. ADB announces the assignments on the websites and candidates choose assignments of interest. First, you have to choose the assignment. For example, if you are related to the logistic management, then first you have to choose assignment of your interest. Then you have to apply for that internship program. All documents are required, just like your transcripts, your degrees, recommendation letters, updated CV, and all other like recommendation letters and statement of purpose. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम पे आपने ऑनलाइन अपलोड करने हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ही कांटेक्ट किया जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉट receiving any email from them, it means you are rejected. करंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं इंटर्नशिप्स की जिनकी डेडलाइन 15 सितंबर तक है उनमें ये हैं, आप देख सकते हैं. सेक्टर एंड प्रोजेक्ट डिवीजन डिपार्टमेंट में, एनर्जी डिवीजन में, गवर्नेंस में, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो प्रोक्योरमेंट मैंने आपको लॉजिस्टिक का बताया उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, आईटी में, इकोनॉमिक रिसर्च विंग में. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स इसमें मौजूद हैं और अपॉर्चुनिटीज़ के नाम भी दिए हुए. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो FAQs में उनके भी आंसर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं. What's the purpose of internship? What is the duration of internship?
ड्यूरेशन कितनी है, 8 वीक्स, 56 डेज और 11 वीक्स तक भी ये इंटर्नशिप हो सकती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। फर्दर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर।